So today we are going to start this paper. तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक, जो हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या किया था। हेबर प्रोसेस हमने देखा था और कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने देखा था। बाकी जो पुराने चैप्टर्स हैं वो थोड़े से पॉलिश हो जाएंगे ये पेपर करने के बाद, थोड़ी सी चीजें फ्रेश हो जाएंगी। Answer the following questions about these symbols and formulae. Each symbol or formula may be used once, more than once, or not at all. State which symbol or formula represents molecule containing only five atoms. इसमें दो हैं, है ना? 2Br, this is 5, this is 6, this is 1, this is 3, this is 1, this is 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is 5. तो एक तो 5 वाला ये है आपके पास, और एक 5 वाला आपके पास ये है। अभी इसने 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 एक वर्ड यूज किया है, एटम्स, है ना भाई? अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग एटम्स, अ मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, दिस इज एन आयन। दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, दिस इज एन आयन। तो इस वजह से आपका ये सही नहीं होगा, बल्कि दिस वन इज करेक्ट। सो CH4 इज योर आंसर। A diatomic molecule of an element in group 7 of the periodic table. ग्रुप 7 में कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल आपको दिया हुआ होगा। सो Br2 इसमें जो है वो डायटोमिक है। एन आयन फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है अच्छी तरह से, जब भी कोई एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इट हैज एन नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज मींस -1, सो Cl माइनस, Cl माइनस। If it gains 2 electrons, so it would be having -2 charge. If it gains 3 electrons, so it would be having -3 charge. An ion which forms a green precipitate with when a few drops of aqueous sodium hydroxide are added to it. भाई कह रहे हैं कि वो कौन सा आयन है which forms a green precipitate when we add sodium hydroxide into it. So copper is blue precipitate, right? So chromium is the one which is going to give you the green precipitate. So I'm supposed to write Cr3 plus. A compound produced by the thermal decomposition of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बेटा? CaCO3. When you decompose this, you will get calcium oxide plus carbon dioxide. So a compound produced. So two compounds are produced. The first one is CaO, another one is CO2. So this is CO2. This is CO2, so I'm supposed to write Ca2, CO2, carbon dioxide. A product of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या होती है? सबको पता है, बड़ा कॉमन सा Carbon क्वेश्चन है। dioxide and आप लोग and I think glucose. ऑक्सीजन, ओए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। Product of photosynthesis is oxygen. So this is oxygen. Okay. A sample of soil is shaken with distilled water. Draw a diagram to show the filtration apparatus used to separate the soil from the solution obtained by shaking the soil with distilled water. On your diagram, label the filtrate and the residue. Okay. तो ऑब्वियसली बात है यार कि सॉइल इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो हमें उसको सेपरेट करना है। तो फिल्ट्रेशन का apparatus लगेगा यहाँ पर। फिल्ट्रेशन के लिए हमने क्या किया, ये पहले मैंने बना दिया क्या, कुछ ऐसा। ओके हो गया जी। थोड़ा सा नीचे कर दूं इसको। यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है पैनल।
सही है जी। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है फिल्टर पेपर। और ओके, सो ओके, सो दिस इज द रेसिड्यू, दिस इज filtrate. Okay, and this is a mixture of soil and water. Basically, residue is your soil and filtrate is your water. Okay, answer these questions using the information in table 2.1. Name the negative ion that has the lowest concentration. That has the lowest concentration. So if you see mass of iron in 1000 cm cube of solution per milligram, per milligram. So किस आयन के पास सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है? अंधे को भी नजर आ जाएगा कि ये ले, दैट इज 0.5. Sir, दिस इज calcium. Cl माइनस, Cl. कैल्शियम. दिस इज बेटा नेगेटिव आयन कह रहे हैं ना, कैल्शियम तो पॉजिटिव है ना? Okay, sir. Cl Yes. माइनस, Cl माइनस. स्टेट द नेम ऑफ द सल्फेट आयन. तो मैंने खुद ही बता दिया, सल्फेट है भाई ये. SO4 है, यहीं से देख के बता देते, वैसे तो मसला नहीं है. ये SO4 2 माइनस है, तो दिस इज सल्फेट. Calculate the mass of phosphate ions in 2000 cm cube of the solution. Mass of phosphate ion in 200 cm cube of the solution. Mass of sulfate in milligram. फॉस्फेट का मास बताना है इन mg. बेटा ये जो आपको मास दिया हुआ है ना, ये जो आपको मास दिया हुआ है ना, ये वाला, बेटा this is in 1000 cm cube, right? So 1000 cm cube contains 1000 cm cube contains 15.5 milligram. Okay, so if I have 200 cm cube, this is x. बेटा करवाइएगा जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, यार क्या आंसर आ रहा है? So I'm getting 3.1. Yes, sir, 3.1. ओके, गुड. इतना आसान पेपर यार, एकदम बिल्कुल बेबी. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सोडियम आयन. ओके, सोडियम आयन, आयन बोले तो Na+, Na+ बोले तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया बोले तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज राइट नाउ, सो यू विल से 10 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे इनिशियली कितने थे? 11 थे, 11 में से एक चला गया तो कितने रह गए? 10 रह गए. So we are supposed to draw 10 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is positively charged. Okay.
Yes, polluted. Okay, water from natural resources contains dissolved gases. Choose from the list the gas which is essential for aquatic life. Draw a circle around your chosen आंसर। भाई कौन सी गैस है यार जो एक्वेटिक लाइफ के लिए वेरी इसेंशियल है? ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना। पॉल्यूटेड वाटर में contain sewage or nitrates. State one harmful effect of each of these water pollutants. देखो बेटा जो सीवेज वाटर होता है ना आपका, लाइक इंतहाई ब्लर होता है वो वाटर, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं। तो आप कह दो कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। लाइक हार्मफुल सब्सटेंसेस मीन्स कि उसमें बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड विच कॉजेज डिजीज। सिंपल सी बात है। तो सीवेज वाटर जो है लाइक कंटेन्स लाइक इट कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया। अच्छा, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स क्या होता है बेटा? मे कंटेन सीवेज और नाइट्रेट। पॉल्यूटेड वाटर में जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? वो आपके वाटर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। और अगर वाटर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई भी अनवांटेड चीज अगर आ जाती है ना, देखो व्हाट इज पॉल्यूटेंट बेटा? अनवांटेड पार्टिकल, लाइक दैट इज नॉट नेसेसरी। तो नाइट्रेट क्या करते हैं? बेसिकली ये रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। This question is about compounds of nitrogen. Complete the dot and cross diagram in figure 3.1 of a molecule of ammonia. Show outer shell electrons only. भाई नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 5 में है। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 1 में है। तो ये इसका ग्रुप नंबर है। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो नाइट्रोजन का डॉट 2, 3, 4, 5। हाइड्रोजन का क्रॉस क्रॉस क्रॉस। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर अमोनिया। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने के बाद इनके आउटर शेल कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप नाइट्रोजन का काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए। ऑल आर हैप्पी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर एयर पॉल्यूटेंट्स। यस, हमने आपको बताया था NO2। यस, NO and NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। स्टेट वन सोर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर। तो क्या कहते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एयर में कहाँ से आ रहा होता है? क्या कहते हो? Car fuels, हम्म यस, वहीकुलर इंडस्ट्रीज। वहीकुलर एग्जॉस्ट। वहीकुलर एग्जॉस्ट। ये इंडस्ट्रीज जिसने भी बोला था गलत था ये। मार्किंग स्कीम और हमारा सिलेबस, इट सेज कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं उनका जो सोर्स है वो वहीकुलर एग्जॉस्ट है, कार इंजन्स। तो आपका जो डोमेन है वो यही है। अपने डोमेन से आपको आगे नहीं निकलना बेटा। यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क। स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जब मैंने पॉल्यूटेंट वहां बताए I हुए wrote, हैं तो मैंने हर एक के नीचे उसका इफेक्ट लिखा हुआ है बेटा। sir, if I तो wrote क्या car कहते हो? fuels, would I get the ओके, mark? सॉरी बिस्मा। If I wrote car fuels, would I get the mark? फ्यूल्स फ्यूल्स Car fuels, like the fuels from car. कार फ्यूल, हाँ एक ही बात है।
फ्यूल की वजह से ही तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, एंड फ्यूल कम्बस्ट इन एन इंजन, तो Thank you, सेम sir. बात है। वो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का? एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? हाँ भाई। Three, इब्राहिम, माहा, मुस्तफा, अब्दुल्ला कैसर, आयशा, अब्दुल समद, हादिया मुजफ्फर। three, एसिड रेन। एसिड रेन, NO2 से बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3, which causes acid rain. Nitric acid causes acid rain. State whether nitrogen dioxide is an acidic or basic oxide. Give a reason for your answer. भाई देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक है ये, और नाइट्रोजन जो है ना आपका बेटा, वो नॉन मेटल है, The acid. और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यस, एसिडिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, एसिडिक होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। चलो जी, this question is about metals and the compounds of metals. State which two of these metals, A, B, C, D, and E, are transition elements. Give two reasons for your answer using only the information in table 4.1. देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। और अब इन चीजों को देख के आपको डिसाइड करना है कि ABCDE में से कौन ट्रांजिशन है और कौन नहीं है। तो इसका देखिए जरा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना? एग्जैक्टली exactly. गुड हो गया जी। सो बी एंड डी। रीजन वन, रीजन वन, बी एंड डी, अब्दुल्ला गुड। बेटा हाई high मेल्टिंग melting point. पॉइंट है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? They form colored compounds. हाई मेल्टिंग पॉइंट, एग्जैक्टली। Higher densities. ये येलो है और ये ग्रीन है, बाकी सारे वाइट हैं, बाकी सारे वाइट हैं। Choose the metal chloride that is insoluble in water. That is insoluble in water. Silver chloride. बेटा ये ग्रुप 2 का है, ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 एंड 2 क्लोराइड्स। ओके, so silver chloride is insoluble. Figure 4.1 shows an incomplete reaction pathway diagram for this reaction. Oh, write these formulae on the diagram. This is this is your reactant. Okay, this is reactant, and this is your product. It shows this is an exothermic system. This is reactant, this is product. It shows this is an exothermic system. Arrow is downward. तो मुझे क्या करना है? रिएक्टेंट्स को यहाँ लिखना है और प्रोडक्ट को यहाँ लिखना है। ओके, Sir, the difference between endothermic pathway and यस। exothermic pathway is just the endothermic starts from the bottom and एरो, goes up. Okay. एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाउ shows that the reaction is exothermic? क्या कहते हो बेटा, क्यों है exothermic?
क्यों है? Sir, वो pathway is exothermic, right? Activation energy is going down. एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ पे शो ही नहीं की हुई। एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ है ही नहीं बेटा। देयर इज नो एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या कहोगे फिर? हाँ भाई, अब्दुल समद क्या कहते हो यार? माहम, आयशा, आदिया, मुजफ्फर, इब्राहिम, Energy is मुस्तफा, being शहजादी, released. लेट आई हो तुम। Sorry, sir. बिस्मा, बिस्मा कुछ कह रही है, बिस्मा कुछ कह रही है। Energy is being released. एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। एरो शोज एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो बेटा देखो जरा, दिस इज योर रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो हायर है, प्रोडक्ट की Sir, एनर्जी जो bonds है are वो forming. That's लोअर why है। reaction is exothermic. हाँ देखो, इसमें पता है क्या लिखना है? आप इसमें ये लिख दो कि यार ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट is higher than the energy of product. Sir, is this past paper on WhatsApp? ये मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, सही है? Okay, sir. ये मैंने तुम लोगों को करवाया था उस दिन बेटा, अगर आपको याद हो, जब हम मेटल का टॉपिकल कर रहे थे। इसको जरा आप दोबारा कर लेते हैं। टेबल 4.2 shows the reactions of four different metals with steam. स्टीम बोले तो, स्टीम बोले तो हॉट वाटर, स्टीम बोले तो हॉट वाटर। बेटा put the four metals in order of their reactivity, put the least reactive metal first. लीस्ट रिएक्टिव वो होता है जो रिएक्शन करता ही नहीं है। तो बेटा Sir, is सबसे it कम niobium? रिएक्शन जिसने किया है वो कौन है? नियोबियम। गुड Niobium. गुड 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 गुड। Then it would be nickel. एंड Then मोस्ट रिएक्टिव, Iron. मोस्ट रिएक्टिव इज रैपिड, रैपिड Magnesium. Magnesium. मैग्नीशियम। गुड हो गया जी, गुड हो गया, गुड। नाउ यू हैव टू डिसाइड iron and nickel. This is slow, this is very slow. The nickel, one then is iron. slow, another is very slow. Sir, iron. First nickel, Exactly. then This iron. is nickel, this is iron. भाई तुम लोग केमिस्ट बन गए हो बस अब। चलो भाई, a compound of nickel has the molecular formula NiP4। बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है यार। ओके, फ्लोरीन के 12 एटम्स हैं। ओके, निकल के कितने एटम्स हैं? 1 है। क्या क्वेश्चन है यार, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। एंड फास्फोरस के कितने हैं? 4 हैं, Or 4 हैं, 4 हैं। नाउ 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 59 into 1, simple. Now the overall is the sum of these three. Sir, you would क्या आंसर plus आएगा ओवरऑल? 411. 228 plus 411. 411. Good. Potassium iodide is an ionic compound. हमें भी पता है क्योंकि potassium is a metal, iodine is a non-metal. State two properties of an ionic compound. यार ये तो बेटा मुझे उम्मीद है कि शहजादी बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी। Sir, high melting point. क्या बात है भाई उस्मान, उस्मान साहब। हाई मेल्टिंग पॉइंट। They cannot conduct अब्दुल्ला कैसे कहते हैं electricity रिएक्शन as बिटवीन मेटल एंड नॉन solid. मेटल? अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हो? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और They conduct electricity when they're molten.
Okay, yes, Shehzadi. Molten potassium iodide is electrolyzed using graphite electrodes. Name the products formed from at the positive and negative electrodes. भाई मोल्टन है। मोल्टन तो आसान होता है ना, वाटर तो है नहीं बेटा इसके अंदर। तो पॉजिटिव के पास जाएगा नेगेटिव, यानी कि आयोडीन, Iodide, and negative we have potassium. So Dean, एंड Potassium. नेगेटिव इज पोटासियम। यस, आयोडाइड जिसने लिखा, he will not get a mark. Iodide will lose its electron and will form iodine. State the name of the positive electrode in an electrolysis experiment. Anode. Anode. Anno, Negative is cathode. Yes. प्रोटॉन्स कितने हैं? 53 हैं। न्यूट्रॉन्स 3. कितने हैं? सब्ट्रैक्ट करवा दो। 127 minus 53 is going to give you 74। 74. तो ये चार्ज किस लिए दिया हुआ है? ये चार्ज क्यों दिया हुआ है? तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। Aqueous chlorine reacts with aqueous potassium iodide. Complete the Sample equation for this reaction. This is gas. Okay. कितने मार्क का है? 2 मार्क का है ना? Gas, aqueous, aqueous. This is I2. Okay. And I2 is what? 2. 2. Iodine. I2. Equation is ना बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 आ गया। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो बैलेंसिंग भी करवाई हुई है, तो फिर स्टेट सैंपल लगाने की जरूरत नहीं है। Displacement, ठीक है जी, sir. दिस Sir, इज this डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कलर ऑफ क्लोरीन गैस। Yellow. मेमोराइजेशन। Green. मेमोराइजेशन। ये येलोइश ग्रीन कह लो। So it can be one yellow or green. ग्रीनिश येलो। Okay. Okay. Oh, organic chemistry. Describe the feature of crotyl alcohol that shows it is an unsaturated compound. क्या कहते हो? There's a carbon-carbon double bond. point. Oh, sorry. Draw a circle around the alcohol functional group. This is OH, OH. OH, and this is carbon-carbon double bond. Deduce the molecular formula of crotyl alcohol. C4H8O. 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, and 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन्स हैं, एक ऑक्सीजन। Okay. Crotyl alcohol is soluble in water. The boiling point of crotyl alcohol is 1 to 1. Boiling point of water is 100. Suggest how fractional distillation can be used to separate a mixture of crotyl alcohol and water. कैसे सेपरेट करेंगे इन दोनों को? ऑब्वियस बात है यार, दोनों में बॉइलिंग का Boiling. डिफरेंस है मेरे भाई। पहले कौन बॉयल होगा? Water. वाटर। पहले वाटर बॉयल होगा, Water. वाटर बॉइल्स फर्स्ट, देन क्रोटाइल अल्कोहल। फिर वाटर जब बॉयल होगा, तो जब वाटर कंडेंसर तक पहुंचेगा, वाटर कंडेंस हो जाएगा, एंड द लेफ्ट बिहाइंड सब्सटेंस इज योर क्रोटाइल अल्कोहल। ओके, तो किसी एक चीज को आप डिफाइन कर दो यार। तो आप ये कह दो, वाटर so it will boil first, okay? और और क्या लिखूं मैं? Then The left behind water will vapor, be.
reaches to the condenser. In a beaker. Easy. Yes, ethanol is also an alcohol. Describe two conditions for the manufacture of ethanol by fermentation. बेटा रिएजेंट और कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अब तुम्हारा माइंड फौरन से क्लिक करना चाहिए। हमने 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 फर्मेंटेशन में क्या किया था। बेटा फर्मेंटेशन में हम डालते हैं यीस्ट जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और हमने उसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया था 30 डिग्री सेल्सियस, और हमने उसे कंडीशन प्रोवाइड की थी एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। ऑक्सीजन शुड बी एब्सेंट, मस्ट बी एब्सेंट। ऑक्सीजन को तो वहां होना ही नहीं चाहिए, वरना तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि वो दो कंडीशन यहाँ पर लिख दो कि जो एथेनॉल आपका फर्मेंट हो जाता है और ग्लूकोज बना लेता है। तो पहले तो आप इसमें लिखोगे कि यीस्ट कैटलिस्ट, In absence of oxygen. एनारोबिक कंडीशन। So what's the anaerobic environment? There is no oxygen, absence of air. Ethanol can be converted to ethene. Choose from the list the general formula of the homologous series to which ethene belongs. The second one. The second one. Ethene is second. Okay. CnH2n. Okay. Ethene can be converted to ethane. Ethane is an alkane. Name the type of bonding in alkanes. Double bond. Carbon Single bond. Bond. Covalent. बेटा टाइप ऑफ बॉन्ड यार, Oh my कोवेलेंट God. मेरे भाई, कोवेलेंट। जब वो टाइप ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो पूछना चाह रहा है आयोनिक है, कोवेलेंट है, मेटालिक है, क्या है। डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है ईथेन का, तो ईथेन का फॉर्मूला वैसे C2H6 है। तो जब मैं इसका डिस्प्लेड बनाऊंगा, ओके, complete the sentence. Alkanes are unreactive except in terms of combustion and substitution by what? By what? क्या कहते हैं भाई? एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं ना, हमने फ्री रेडिकल किया था ना वो रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्लोरीन से होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन बाय क्लोरीन। कंप्लीट द सैम्पल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। CO2 बनता है एंड वाटर। बैलेंस करेंगे जब हम इसको, तो जस्ट यहाँ पर 2 लग जाएगा, दैट्स इट। This question is about iron. Iron is extracted from iron ore in a blast furnace. Name the main ore of iron. This is hematite. है ना? अब ये भी किया था, Bauxite. बिल्कुल डिसेंट टॉपिक है, हमने किया है। बॉक्साइट Al2O3 का वो होता है, एल्यूमिनियम का होता है वो बॉक्साइट। Okay, the main ore of iron contains iron 3 oxide. Describe the extraction of iron from iron ore in the blast furnace. Your answer describe the production of carbon monoxide. बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना था? Incomplete combustion of carbon. इनकम्प्लीट कंबशन क्यों थी लड़की? Sir, we had कंबशन तो बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन तो तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन था वहां पर, तुम एयर ब्लो कर रहे हो नीचे से।
तो इसमें होता क्या है Carbon. बेटा? Oxygen reacted with the carbon while going up the blast furnace. Basically, carbon Carbon burns in air and then reacts with more carbon. combusts in the presence of oxygen to form carbon dioxide. Carbon Sir, dioxide, okay? sir, but we're Then talking about monoxide, carbon right? dioxide, yes. Oh, Then okay. carbon dioxide is reduced by carbon, then to form carbon monoxide. The role of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड का रोल क्या था? क्या कहते हो? ब्लास्ट फर्नेस की इक्वेशन ये होती थी ना, देखो जरा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसने Fe2O3 से ऑक्सीजन को ले लिया और Fe2O3 को Fe बना दिया। तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया वहां से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या कहते हो? तो लिखो रिड्यूसिंग एजेंट। रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Catalyst. नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, कैल्शियम कार्बोनेट हमने डाला था ताकि इम्प्योरिटी रिमूव हो वहां से। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हुआ था तो उससे बना था कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड ने सिलिका जो कि इम्प्योरिटी थी, सिलिका के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाया था। स्लैग बनाया था, स्लैग लिक्विड फॉर्म में था, हमने उसे रिमूव कर लिया था इन द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस से। तो कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड आफ्टर डिकम्पोजिशन। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Calcium oxide combines with impurity such as silica to form okay, which can be removed easily to form slag. Slag is basically calcium silicate. Okay, Sir, can you scroll up a bit? I just need to take a screenshot. iron Thank you, sir. collects at the base of the blast furnace as liquid. Describe the arrangement and motion of the particles in a liquid. लिक्विड की अरेंजमेंट कैसी होती Not है? ऑब्वियस fixed, सी बात है, इरेगुलर, हाँ, नॉट फिक्स्ड, but they're close together. और यू कैन से इरेगुलर। एंड The motion मोशन, is random. मोशन कैसी They होती है slide इनकी? over each other. रैंडम, स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। Slide over each other. Okay. Describe how this equation shows that iron is oxidized. तो आयरन ने ऑक्सीजन गेन किया ना,
It आयरन ने gains क्या किया? oxygen. Yes, Oxygen. exactly. Iron gains oxygen. Rust is hydrated iron 3 oxide. Define the term hydrated. Hydrated means Water contains water. हाँ subs यानी कि the substance So part two is oxygen and water. which reacts with water. Reacts with water. Yeah, you can say So which is it is reacts chemically or is it combined with water. contains? Chemically combined होता है वो chemically combined, not Okay. physically. Name two substances needed for iron to rust. दो चीजें चाहिए होती हैं, एक What? ऑक्सीजन और And water. water. Crystals of iron 2 chloride can be prepared by adding excess iron to dilute hydrochloric acid. This is how the unreacted iron is removed from the reaction mixture. You know, unreacted iron is solid, and solid can be removed by By filtration. 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 Filtration is a separation technique which removes solid particle, insoluble particle. How dry crystals are made from a dilute solution of iron 2 chloride. सॉल्यूशन में से तुम्हें क्रिस्टल्स अलग करने हैं, तो तुम एक काम करो, सॉल्यूशन को इवापोरेट करो. Heated till crystallization. Exactly. Heat the solution. Heat the solution to point So of sir, we have iron crystallization. and chloride in the solution, right? So we're gonna heat so that Hmm. chlorine can get evaporated, and we will have iron. वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपके पास पीछे क्या बचेंगे? क्रिस्टल्स बचेंगे. The water evaporate हो जाएगा, leaving behind the crystals, leaving behind the crystals of iron 3 chloride. And then dry Between two filter papers. crystals with filter paper. Figure shows the volume of hydrogen gas released as the reaction proceeds. Okay. Okay. Reduce the volume of hydrogen gas released after 2 minutes. This is 2 minutes. This is 2 minutes. This is 2 minutes. That would be 27 centimeter. this. Exactly. This is 27 cm cube. The student repeats the experiment using dilute. All other conditions remain the same. Draw a line on the grid. Draw a line on the grid to predict how the volume of hydrogen gas changes when dilute hydrochloric acid of higher concentration is used. Dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid. क्या कहते हो बेटा? कहाँ बनाना It चाहिए should be मुझे? steeper and not in the same as the beginning graph. Like this? So if there's more concentration, there's gonna be more volume. Like this? Yes. The student repeats the experiment with large piece of iron. All other conditions stay the same. How the rate of reaction differs from with the large pieces of iron are used.
भाई लार्ज They're पीसेस का slower. मतलब क्या है? आपका सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया ना। लार्ज पीसेस मीन्स द लोअर सरफेस एरिया। So slower. So rate decreases. Rate decreases. The student repeats the experiment with iron powder. Iron powder बोले तो higher surface area. So the reaction Positive. rate would increase. Exactly. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide. Oh, acid-base reaction. Acid-base reaction. So you will be getting sodium chloride Plus water. and water. Beta, this is HCl. This is NaOH. This is NaCl. This is water. Right? Write the formula of the ion present in all acids. In all acids, H plus. Proton donors होते हैं ना ये. Draw a circle around your chosen answer. Choose from the list a possible pH value of sodium hydroxide. बहुत Sir, strong for base है. बहुत strong है. Yes, sir, for certainly. part II, could you scroll up a second? Yes. Over here, they increase the temperature from 15 to 20. So within the rate of Where? reaction, they decrease the temperature from 20 to 15. So the rate of reaction. ओके ओके, ये तो हमने देखा ही नहीं भाई. गुड यार, गुड हो गया. टेम्परेचर, बेटा आप लोग देख रहे हैं इन्होंने क्या किया है. When a temperature of 15 degrees Celsius is used. Temperature of 15 degrees Celsius is used, right? वो 20 डिग्री सेल्सियस था बेटा. तो अब डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा. But sir, उन्होंने surface area भी तो increase किया. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. लेकिन बेटा इन्होंने टेम्परेचर कम कर दिया है ना. हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ. व्हेन अ टेम्परेचर बताया आयरन पाउडर का है, लेकिन पूछ किसका रहा है. तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड. ओके, तो 15 डिग्री करोगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट होगी और रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो जाएगा उससे अल्टीमेटली. भाई कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? किसको Yellow, पता है yellow, कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज? एग्जैक्टली. yellow. Yellow. इन इन अल्कलाई में येलो होता है और एसिड्स में क्या होता है? Red. बेटा ये पेपर हमारा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. और ऑर्गेनिक बेटा मैं आपको फिर कह रहा हूँ देख लीजिएगा लाजमी. तो इंशाल्लाह इसको फर्दर पेपर करते रहेंगे हम. और